Good evening, you're watching 7 at 7, the only news bulletin where we curate the day's top 7 stories for our viewers. Before I hit the headlines, I want to quickly take our viewers through where India stands with its fight against coronavirus. Numerically, viewers, we're right now at 38,53,406 positive cases. Till now, we've recorded 67,376 deaths. The worst hit state continues to be the state of Maharashtra, with a total import of numbers of positive cases at 8,25,739 and 25,195 deaths. Andhra Pradesh is at the second place with 4,55,531 positive cases and 4,125 deaths. Tamil Nadu is third now with 4,39,959 positive cases and 7,516 deaths. All right, top story. India Today has accessed a new drug chat between Rhea Chakraborty and her brother Shouvik. Now, this is dated March 15th. The chat has made revelations as it suggests that Rhea was asking Shouvik to arrange drugs. The chat portrays Rhea was demanding drugs from her brother for Sushant Singh Rajput, while informing him that Sushant smoked 4 times a day. Thus, the quantity of drugs need to be taken into consideration. Both Shouvik and Rhea are under the NCB scanner. The team has already questioned 4 drug peddlers, while 2 were arrested after alleged links with Shouvik. I want to connect right now to my colleague Arvind Oja, who's going to talk us through this chat. Arvind, would you take us through and what this chat says, please? देखिए प्रीति, ये जो व्हाट्सएप चैट है ये 15 मार्च 2020 का है और रिया चक्रवर्ती और शोविक के बीच ये व्हाट्सएप पर बात हो रही है। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट लाइन है वो मैं पढ़ के आपको बताता हूं। ही स्मोक 4 a day, सो प्लान अकॉर्डिंगली। ये रिया चक्रवर्ती अपने भाई को कह रही है, शोविक चक्रवर्ती को, कि वो दिन में 4 स्मोक करता है, यानी ड्रग्स की स्मोकिंग की बात हो रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब यही जानने की कोशिश कर रही है कि ये वो शख्स कौन है। क्या सुशांत है? क्या सुशांत के लिए रिया चक्रवर्ती ये ड्रग्स अपने भाई से अरेंज करा रही थी? लेकिन अब इस चैट के बाद रिया चक्रवर्ती भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर है। इंडिया टुडे के पास ये एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप चैट है रिया चक्रवर्ती और शोविक के बीच, जो उसके भाई हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो शोविक चक्रवर्ती है उसके ड्रग पैडलर से लिंक भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास अब है, क्योंकि जो 2 ड्रग पैडलर जिनको अरेस्ट किया गया है उन्होंने बाकायदा अपने स्टेटमेंट में बताया है कि वो लगातार शोविक चक्रवर्ती और सुशांत का जो स्टाफ था सैमुअल मिरांडा, उनसे कांटेक्ट में थे। तो अब जो शोविक चक्रवर्ती है और सैमुअल मिरांडा, वो तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर थे, लेकिन ये व्हाट्सएप चैट से अब वो रिया चक्रवर्ती के रडार पर भी है। साथ ही साथ सवाल ये भी उठता है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये अब जानने की कोशिश करेगी कि आखिर रिया चक्रवर्ती किसके लिए अपने भाई से ड्रग्स की डिमांड कर रही थी, और ये भी बोल रही है उसमें कि वो दिन में 4 बार ड्रग्स की सिगरेट लेता है। इसमें बाकायदा बड की भी बात हो रही है। जो मुंबई में इस वक्त जितने भी ड्रग पैडलर हैं उनमें काफी ज्यादा डिमांड बड की है। ये एक रिफाइंड मेनुआना है जो फॉरेन से आता है और कोकीन से ज्यादा इस वक्त यहाँ पर मिल रहा है। तो ये अपने आप में काफी जो ये व्हाट्सएप चैट है ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने डेटा से निकाला है, जो काफी चौंकाने वाला है। इससे दोनों जो भाई और बहन है उनके बीच ये व्हाट्सएप पर बातचीत चल रही है। हालांकि रिया चक्रवर्ती पहले लगातार मना करती रही, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आखिर किसके लिए ड्रग्स मांग रही है। क्या ये सुशांत के लिए मांग रही थी? क्या सुशांत दिन में 4 बार इस तरह के ड्रग्स को सिगरेट पीते थे? अब इस मामले में इन्वेस्टिगेशन होगी। प्रीति, अरविंद, मुझे एक चीज बताइए, एज पर लॉ अगर रिया ने जैसे इस चैट में बात की है मैरुआना की, डूबीज की, बड की, अब वो कह रही हैं कि ये सुशांत के लिए है, क्या ये लायबल है एज पर द लॉ? क्योंकि प्रोक्योर तो यही कर रही है, या ये कह सकती हैं कि मैं सुशांत के लिए ले रही थी? जी देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं आपको बताता हूं। 66 NDPS एक्ट, ये जो NDPS एक्ट है, इसमें अगर कोई भी शख्स सामने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बयान देता है तो उसके पास से किसी ड्रग्स की रिकवरी नहीं भी होती है। अगर वो किसी के खिलाफ या किसी के लिए बयान देता है तो वो बयान कोर्ट में एडमिसेबल होता है और सिर्फ उस स्टेटमेंट पर ही 1 साल की सजा हो सकती है। आपको फिर से मैं बताता हूं कि ये NDPS एक्ट 67 NDPS एक्ट में अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम के सामने कोई भी शख्स ये स्टेटमेंट देता है कि उसने ड्रग्स कभी लिया था या ड्रग्स खरीदा था, तो कम से कम 1 साल की सजा होती है। और ये सिर्फ बयान ही
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने दिया जाता है तो वो कोर्ट में एडमिसेबल होता है, जबकि अदर एजेंसी होती है जैसे पुलिस, उनके सामने अगर आप 161 का बयान देते हैं तो वो कोर्ट में माने नहीं रखता, वहां 164 के स्टेटमेंट की वैल्यू है। लेकिन यहां अगर एनसीबी की बात की जाए तो यहां पर अगर कोई शख्स जैसे जो ड्रग पैडलर अरेस्ट हुआ है जैद, अगर उसने बयान दिया शोभिक के खिलाफ तो वो काफी सफिशियंट है। अगर कोई अमाउंट सब्सटेंस वो रिकवर नहीं भी हुआ है तो ये सिर्फ स्टेटमेंट पर ही किसी को भी सजा हो सकती है। तो ये आपने काफी बड़ा सवाल पूछा था और यही जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसी रणनीति पर आगे बढ़ रही कि उनको मानना, उनका कहना है कि पहले से ही व्हाट्सएप चैट काफी ज्यादा मीडिया में लीक हो गए थे, इसलिए दूसरा लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन उन्होंने पकड़ा और जो ड्रग पैडलर थे उनको अरेस्ट किया। अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास ड्रग पैडलर भी है, व्हाट्सएप चैट भी है, स्टेटमेंट भी है। इसी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम आगे बढ़ेगी। अरविंद, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का। थैंक यू अरविंद फॉर जॉइनिंग अस। मीनवाइल, just cutting across to an interview to India Today, that Riya, where she claimed that she wanted Sushant to quit marijuana. Listen in. 2020 सैमुअल मिरांडा का एक कॉन्वर्सेशन आया हुआ है कि स्टॉक इज ओवर। इससे यह पता चलता है कि या तो आप ड्रग ले रही थी या सुशांत ले रहा था। सच्चाई क्या है? इट्स अनफॉर्चुनेट कि किसी के गुजर जाने के बाद हमें उनकी वाइसेस को ऐसे एक्सप्लॉइट करना होता है, पर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे, मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। और मैं इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में मैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, मैं कट डाउन करने की कोशिश करती थी। लेकिन ही वॉज अ मैन ऑफ हिज ओन चॉइसेस, ही वॉज अ ग्रोन मैन हु चोज व्हाट ही वांटेड टू डू एंड नोबडी कुड स्टॉप हिम। यू डिड नॉट एनकरेज हिम टू टेक ड्रग्स? Absolutely not. In fact, I have a Even chat. though he was on the habit, वो ड्रग पर है, लेकिन आपने कभी उनको एनकरेज नहीं किया? नहीं, मैंने You didn't try to stop him? I tried to stop him. I tried to stop him and I tried to tell him to reduce it. But it is something he would do. I never indulged in any Here kind is a of man drugs. in depression, he's taking drugs. Isn't that a serious situation to be in? I mean, it must have been therefore difficult for him, and you're saying you were unable to stop the person you loved so much. Exactly, which is my main point, that Sushant did exactly what he wanted to do. If he wanted to smoke drugs, he would smoke drugs. If he wanted to take medication, he would take medications. If he didn't want, nobody on earth could convince him. And you have never taken drugs with him? No. All right, I'm going to quickly dip into news break that's coming in. The Kangana Ranaut versus the state of Maharashtra war has exploded. Kangana has now alleged that the Mumbai police ignored Sushant's complaints. Kangana tweeted out a short while ago saying, "After a major star has been killed, I spoke about drugs and movie mafia racket. I do not trust the Mumbai police because they ignored Sushant Singh Rajput's complaints. He told everyone they will kill him, yet he was killed. If I feel unsafe, does that mean I hate the industry and Mumbai?" Meanwhile, a day after accusing the Mumbai police of twisting their statements, Sushant's family has gone ahead and leveled another big charge. Addressing the media today, the family lawyer said he doesn't see Sushant's death as a suicide, but a murder. The lawyer further added that the family refused to believe that Sushant could have hung himself. Lawyer Vikas Singh once again fired salvos against Mumbai cops, claiming it forced Sushant's sister to sign statements in Marathi and leaked it subsequently, adding that Sushant's sisters were not given any copy of statement. India Today had accessed statements of the family to the Mumbai police, which has now been disowned by them. The Mumbai police in the statement says that the family in June admitted of being aware of the late actor's mental health. The three sisters, Neetu, Priyanka, Meetu, who recorded their statement, said that Sushant felt low. Meanwhile, Priyanka confirmed that Sushant was consulting a psychiatrist since 2013. The family is definitely having grave doubt that this is not suicide and this is murder. परिवार को बड़ा गंभीर शक है कि शायद ये सुसाइड नहीं, क्योंकि हमारा जो एफआईआर था वो अबेटमेंट टू सुसाइड था, लेकिन अब जिस तरह की बातें आ रही हैं, अब लग रहा है कि शायद ये सुसाइड नहीं, अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं, बल्कि बहुत गंभीर अपराध शायद मर्डर का है।
Meanwhile, the CBI has now expanded its probe in the Sushant Singh Rajput death case. The CBI now started to look for any possible link between Sushant's death and his ex-manager Disha Salian. Disha died after she fell from her high-rise apartment in Mumbai's Malad. She died on the June 8th, nearly 6 days before Sushant's death. The CEO of Cornerstone, Bunty Sachdev, the firm for which Disha Salian was working and handling Sushant, is being questioned by the CBI. The top investigating agency is not probing Disha Salian's death, but also looking into a possible link between the death of SSR and Disha. The situation in Ladakh is extremely tense on the back of action being planned by the Indian Army to secure territory. While there is no headway in talks between the two nations, Indian Army continues to dominate the Dragon at 6 strategic positions. Take a look. The southern banks of the Pangong Lake, now dominated by Indian positions, with Chinese positions in India's line of sight and fully vulnerable to Indian action. But like we also told you first, the Indian Army's actions in the last 6 days in Ladakh aren't restricted to just the south bank of the Pangong. In fact, the Indian Army has moved to take dominant positions along the entire stretch in eastern Ladakh. Apart from the dominant positions on the Pangong south bank, the Indian Army has readjusted its positions across the lake on the north bank's Fingers complex, further north in Hot Springs, and even at the restive Daulat Beg Oldie sector of northern Ladakh that overlooks the Depsang Plains, a sector where China has provoked continuously with a build-up and blockade of Indian patrol teams. Even south of the Pangong south bank, the Indian Army has strengthened its positions in Chumar all the way south to the Demchok sector. But what do these actions actually mean on the ground? To begin with, the Indian Army positions at these strategic heights means it becomes more difficult for China to mount any more aggressive actions. The Indian posts can track Chinese movements far more easily and in real time, with early warning of Chinese build-up and activities. India's dominant positions also allow better forward planning of India's next steps. The situation in eastern Ladakh remains extremely tense in the backdrop of certain actions taken by the Indian Army to secure territory and provide a tactical ultimatum to the Chinese. While a fragile line of communication still exists between the brigade commanders of the two armies, it's very clear that from here onwards, temperatures are going to rise despite the onset of winter in eastern Ladakh. With the army chief taking stock of the actions of his troops, India's men on the ground also know they have the full support and backing of the leadership to do what it takes. With Abhishek Bhalla in Leh, Ladakh, Shiv Arur in Delhi for India Today. A day after the centre banned 118 Chinese applications, including PUBG, the Dragon has cried foul. The Chinese government says that the app ban violates legal interests of China investors and service providers and have asked India to reconsider the ban. The Narendra Modi government's decision to ban an additional 118 mainly Chinese apps has sent shockwaves through China, sparking protests from the Chinese Commerce Ministry. But the United States has welcomed the move wholeheartedly, urging other freedom-loving countries and companies to work towards a clean system online. The Chinese Foreign Ministry issued a stern statement strongly opposing the move. Indian actions violate the legal interests of Chinese investors and services providers, and China asks India to correct its mistakes, Commerce Ministry spokesperson Jiao Feng said. Shares of the Chinese gaming and social media giant Tencent Holdings has fallen more than 2% after India banned 118 Chinese apps, including popular mobile game PUBG. The move comes as a major blow
as India ranks #1 in terms of PUBG downloads, with 17 million PUBG installations in India alone, 24% of the total downloads worldwide. India had in June banned 59 Chinese apps on similar grounds of illegal data mining and for being detrimental to the country's sovereignty and integrity. The market valuation of TikTok fell from $100 billion in May 2020 to about $50 billion, a massive fall of 50% in just 2 months, according to a report by the Observer Research Foundation. The activities that these apps have engaged in are prejudicial to the sovereignty and integrity of India, defense of India, to the security of state and public order. The United States wholeheartedly welcomes India's move, coming out strongly in favor of the Chinese app ban, a US statement quoting Keith Krach, US Undersecretary of State for Economic Growth, said. India has already banned 100+ Chinese apps. We call on freedom-loving nations and companies to join the clean network. Analysts say the decision to ban 118 Chinese apps sends out signals at multiple levels, domestically, to China and to the world at large. Domestically, it protects Indian users from Chinese data mining and trolling. Internationally, it compels other countries to protect their citizens and take similar action against Chinese apps. To China, it sends out a very strong message. The valuation of Chinese companies go down. TikTok, for example, went down by 50% just in 2 months. And China will be forced to choose transgressions at the line of actual control or peace and prosperity. With cameraman Kripal Singh in Delhi, Gaurav Sawant for India Today. All right, just moving on in the times when we have surging cases of COVID, the standard operating procedure for metros to operate have been announced by the centre. This as last week the government decided to make metros functional from September 7th under the Unlock India 4.0 plan. However, the metro station containment zones will remain shut. As per the new guidelines, it would be mandatory for all passengers to wear masks and use smart cards to avoid spreading the coronavirus. The passengers would be screened at the entry point and only asymptomatic people will be allowed to enter. The metro trains can skip stations if it is carrying enough commuters in order to ensure social distancing. The authorities have planned to make repetitive announcements and put LEDs for commuter awareness. Welcome back. Ending 7 at 7 as usual by busting certain claims masquerading to be facts on social media. Well, there's one such claim floating about. You might have seen it on various social media platforms or on WhatsApp groups of Muslim refugees in Switzerland demanding removal of a cross from the flag. Well, this viral image is from Pakistan protests in 2006. Nothing to do with Switzerland. With that, it's a wrap on 7 at 7. We, of course, will see you tomorrow, but do stay tuned. Up next is To The Point. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.